Hi everybody, welcome back to our another IELTS speaking video. And in this video, I am going to talk about part 3 and which is related to the topic talk about someone who made noise, which is the latest cue card. And today in this video, I am also going to explain in Hindi so that everybody understands each and every piece of language clearly. So let's begin. The first question is, where can people hear a lot of noise? Normally, we tend to hear noises from marriage palaces or party halls in my town, which drives me mad. And these places make an awful lot of noise. Also, some roads are noisy because of heavy vehicles such as lorries and cars with massive engines. What's more, living near airport could be deafening as well. One thing more, I can't stand dogs' noise, especially when I'm working at night time. Then usually I'm filled with dread at that time. So normally आमतौर पर हम लोग यूज़ करते हैं normally आमतौर पर we tend to we use अक्सर ये चीज़ हम सुनते हैं, ये शोर जो है हमें सुनने को मिलता है मैरिज पैलेसेस जो है अक्सर जो है अगर आपका घर मैरिज पैलेस के पास में है, अगर नहीं भी है, अगर आप स्मॉल टाउन में रहते हैं तो कोई ना कोई आपके ज़रूर घर के पास कोई मैरिज पैलेस होगा जहाँ से शोर होता है, या फिर पार्टी हॉल्स जहाँ से अक्सर नॉइज़ आपको सुनने को मिलता है. Which drives me mad. If you say that something drives you mad, this means that जो आपको गुस्सा दिला दे, आपको पागल कर दे और जिससे आप इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो. जैसे हो सकता है कई लोग चाय पीते हैं और चाय पीते पीते थोड़ा सा नॉइज करते हैं like that, and you say that, hey, come on, stop that, it's driving me mad. And these places make an awful lot of noise, बहुत सारा noise. Also, some roads are noisy because of heavy vehicles such as lorries. Lorries, trucks को आप बोल सकते हैं, truck को lorry भी बोलते हैं. And cars with massive engines. Massive means बहुत बड़ा. What's more, living near airport could be deafening as well. Deafening means मतलब ये जो है मतलब आपके जो कान है ये गूंजना शुरू कर देंगे और कई बार ऐसा होगा कि आपको सुनना ही बंद हो जाएगा. So one thing more, I can't stand when you say that, so this means that you don't like when you say that I can't stand it. Example, if you say, I can't stand when people lie. I can't stand when you get late. I can't stand dogs. अगर आपको dogs पसंद नहीं है, so you might say that I can't stand dash. I can't stand ABC thing. It could be anything, right? Okay, so I can't stand dogs noise, especially खास तौर पर when I'm working at night time. Then usually I'm filled with a dread. When you're filled with a dread, this means that you have negative feeling about anything. This means that you are depressed or you're sad about anything. I'm filled with dread at that time. Question number 2, what may happen if one listens to very loud music using earphones when they're running or hiking? Oh, now this is a trickier one for me. I'm a big believer in saying that says excess is bad for everything. Let's say if you're crossing a road while putting on earphones, then you might not be able to hear horns, which can be touch and go. Whereas if you're using earphones while doing exercises in the gym, then I assume it's perfectly safe to listen over there. पार्ट 3 में ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आपको लगे कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है. सो उस क्वेश्चन की आप ओपनिंग सेंटेंस इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. ओह, नाउ दिस इज़ अ ट्रिकियर वन. एक होता है ट्रिकी और एक होता है ट्रिकियर. ट्रिकी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन ट्रिकियर तो बहुत मुश्किल है. ट्रिकियर. ओह, नाउ दिस इज़ अ ट्रिकियर वन फॉर मी. I'm a big believer in a saying, ये मैंने पहले भी यूज़ किया था अपनी एक वीडियो में. I'm a big believer in saying, when you say I'm a big believer in something, this means that you have a great faith in that. That says excess is bad for everything. Excess ज़्यादा हर चीज़ बुरी है. ज़्यादा गुस्सा भी बुरा है, ज़्यादा प्यार भी बुरा है, ज़्यादा बोलना बुरा है, ज़्यादा कुछ भी, anything. Excess is bad. ज़्यादा हर चीज़ बुरी है. Excess is bad for everything. Let's say, जब आपको बोलना for example, for instance, such as, उसकी जगह पर आप let's say भी यूज़ कर सकते हैं. Let's say
If you're crossing a road while putting on earphones, then you might not be able. कोशिश करें मे माइट यूज़ करने की, बहुत कम यूज़ करते हैं, मैंने देखा स्टूडेंट्स मे माइट को ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि वेल हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आप श्योर हैं, और मे माइट हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आप श्योर नहीं हैं. देन यू से दैट देन यू माइट नॉट बी एबल टू हियर हॉर्न्स. हो सकता है अगर आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं, जैसे अक्सर आपने रोड पे देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे चलते हैं ईयरफोन्स लगा के गाने सुनते सुनते क्रॉस कर रहे हैं रोड को. सो विच कैन बी टच एंड गो, which can be touch and go. Touch and go मतलब हो सकता है कि किसी भी मिनट, किसी भी पल दुर्घटना हो सकती है, कुछ इंसिडेंट हो सकता है. वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. Whereas if you're using earphones while doing exercises in the gym, अगर आप earphones यूज़ कर रहे हैं exercises करते हुए, then I assume means I think. काफ़ी बार मैंने यूज़ किया अपनी वीडियोस में. Don't say I think. Try to use something different. I assume it's perfectly safe to listen over there. What can be done to reduce traffic noise? I guess I'm not the best person to ask this question. Having said that though, if I had to combat with this traffic noise, then cycling should be encouraged more by government, which is fairly quieter than other vehicles. People should not be allowed to travel by their own vehicles every day, whereas they could commute by public transport. To ask this question, starting में आप ये भी यूज़ कर सकते हैं I guess, I think की जगह पर, और पार्ट 3 में जो क्वेश्चन आपको लगे कि मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूँ और मैं इसके लिए सूटेबल पर्सन हूँ, मुझे लगता है किसी और को पूछना चाहिए आपको, बट फिर भी मुझे पूछा है, मेरा स्पीकिंग का एग्जाम है तो आंसर भी मैं ही दूंगा. आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन. व्हेन यू से दिस इज गोइंग टू इम्प्रेस द आइल्स एग्जामिनर. आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज आइल्स स्पीकिंग टेस्ट जो है वो एक लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट है. आपको टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट अनकॉमन लैंग्वेज दिखाने की कोशिश करनी है, सो दैट यू कैन स्कोर हाई band. I'm not the best person to ask this question. Having said that though, when you say having said that though, this means but. When you try to say but, so you can use having said that though. It's more complex. If I had to combat means अगर मुझे इसका solution, इसके साथ अगर मुझे fight करना पड़े traffic noise के साथ, then cycling should be encouraged. Passive. साइकिलिंग शुड बी एनकरेज्ड. साइकिलिंग को बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, विच इज़ फेयरली क्वाइटर, जो कि ज़्यादा मतलब जिसका शोर नहीं होता है, देन अदर व्हीकल्स, जो कि शांत है, बड़ा इट्स फेयरली क्वाइटर. पीपल शुड नॉट बी अलाउड, लोगों को अलाउड नहीं करना चाहिए टू ट्रैवल बाय देयर ओन व्हीकल्स एवरी डे, वेयर एज दे कुड कम्यूट बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट. कम्यूट मीन्स ट्रैवल करना, जो हर रोज़ ट्रैवल करते हैं. Do you think the world will be noisier in the future? Oh, I'm not entirely sure. This is because electric cars are increasing day by day. Therefore, more places would become eco-friendly. Well, there are multiple reasons for this, but I'll highlight a few of these. Firstly, petrol or gas prices are awfully getting increased on a regular basis. Secondly, it reduces the noise pollution, so many would be fascinated in them in the foreseeable future. Finally, many never know what they can benefit from electric vehicles. So, third section में आप ये भी use कर सकते हैं. Oh, I'm not entirely sure. मैं sure नहीं हूँ ज़्यादा. This is because ऐसा इसलिए है, electric cars are increasing day by day. जो electric cars हैं, electric vehicles जैसे स्कूटी हैं आजकल electric चलती हैं. Therefore, more places would become eco-friendly. ज़्यादातर जो है eco-friendly environment होने वाला है. Well, there are multiple reasons for this. जब आपको 2-3 reason आपको third section में देने चाहिए. There are multiple reasons for this, but I'll highlight. I will की contraction है. When you want to say I will, so try to use contraction like this. I'll highlight a few of these. Firstly, देखिए ये words भी आपको use करने चाहिए, जैसे firstly, secondly, thirdly, mainly, finally. Firstly, awfully getting increased. Awfully means really.
Secondly, it reduces the noise pollution. So many would be fascinated. When you say fascinated, this means interested. Interested की जगह पर आप यूज कर सकते हैं fascinated. In them in the foreseeable future, जो आने वाला फ्यूचर है उसमें ये चीज हो सकती है, राइट? ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं कब? In the foreseeable future, जो फ्यूचर देखा जा सकता है. Finally, when you say the finally word, this means that examiner gets to know that you're at the end of your answer. Finally, many never know what they can benefit from electric vehicles. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या बेनिफिट वो ले सकते हैं. अगर आपने भी अब तक यूज़ करना शुरू नहीं किया तो आप भी यूज़ कर सकते हैं और इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं. So guys, this was our today's video. In case you're looking for online IELTS classes, my WhatsApp number is on the screen. Once again, thank you so much for watching this video. Stay tuned.